So today, guys, we'll be starting with dynamics worksheet 2. Actually, define force. Force is basically what? It is your rate of change of momentum. ठीक है? अच्छा, इसकी जो मैंने वर्कशीट आप लोगों के लिए लगवाई हुई है मार्कस की, वो क्वेश्चन के साथ ही है, ठीक है? जस्ट फॉर प्लीज। तो फोर्स जैसे हमारे पास होती है ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके। अच्छा. A ball falls vertically downwards towards a horizontal floor and then rebounds along its original path, as illustrated in figure 3.1. The ball reaches the floor with a speed of 3.8 meters per second. The ball is in contact with the floor for a time of 0.081 seconds before leaving it with a speed of 1.7 meters per second. The mass of the ball is 0.062 kilograms. Calculate the loss of kinetic energy of the ball during the collision. अच्छा, it's very simple by the way. 1/2 mv square. अच्छा, हमने कभी भी याद रखें डिफरेंस फाइंड करना हो काइनेटिक एनर्जी में, अगर आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो इधर आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दिया करें, ठीक है? याद रखें वी माइनस यू होल स्क्वायर नहीं, इट्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ओके? there's a difference. So 1/2 into mass, that is 0.062 into 3.8 square minus 1.7 square. What's the answer? What's the answer? 0.3465, so it's going to be 0.35 joules. देख लेते हैं आंसर हमारे पास। अच्छा, एक वैल्यू आपने फिर थोड़ा सा आपने कुछ वैल्यू गलत पुट की है, क्योंकि अगर वो राउंड ऑफ करे तो उनका राउंड ऑफ 36 बन रहा है। देख लें 36। Determine the magnitude of the change in momentum of the ball during the collision. चेंज इन मोमेंटम के अलावा वो वैसे इम्पल्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। तो हमारे पास ये हो जाएगा 0.062 था। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि जस्ट मल्टीप्लाइड बाय दी सम ऑफ दीज वैल्यूज व्हेन इट इज रीबाउंडिंग। जब भी वो रीबाउंड करता है डायरेक्शन चेंज होती है, इन दोनों को सम कर लिया करें। तो दैट्स गोना बी 4.5 5.5 5.1 एक्चुअली, नहीं 1 2 5 गया and 5.6. What's the answer, Yamna? Again, same answer. 0.34, correct. And show that the magnitude of the average resultant force acting on the ball during the collision is 4.2. So guys, F is equal to change in momentum over time, 0.34 over time. What's the time? 0.081. हमारे पास 4.2 या आ जाएगा। ये भी हो गया इजी पार्ट। मुझे बताइए ये सारे पार्ट्स क्लियर हैं? Are these 3 4 parts clear? Sure. Use the information in 3 to calculate the magnitude of the average force of the floor on the ball during the collision. अच्छा, अब इसके लिए याद रखें the average force of the floor on the ball.
बॉल ऊपर से नीचे गिरता है, एक हमारे पास गाइस फोर्स लगती है ड्यू टू इट्स मोशन, दैट इज ड्यू टू इट्स चेंज इन मोमेंटम, दैट वाज 4.2 न्यूटन। ये वाली फोर्स तो सबको क्लियर है ना, कि ये भी ऑफ कोर्स अर्थ वापस उसके ऊपर एक्सर्ट करेगा। हाउएवर देयर इज वन मोर फोर्स, कैन समवन नेम दैट, और कैन समवन गेस व्हिच फोर्स एम आई टॉकिंग अबाउट? यहाँ एक और फोर्स भी लगती है, इट्स बेसिकली द वेट। देखिए ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है उसका अपना वेट भी होता है, ये हमारे पास सिर्फ कोलिजन वाली है, दिस इज ओनली फॉर द कोलिजन, ये 4.2 न्यूटन। हमारे पास क्या है दूसरी फोर्स, दैट्स आवर वेट। वेट भी चूंकि हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब इस केस में वेट कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस 0.062 इंटू 9.81। इसका आंसर क्या आता है? 4.8। yeah, it's going to be 4.8, and the average force of the ball on the floor during the collision। अब हमारे पास एवरेज फोर्स ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द collision क्या होगी? It's going to be exactly the same. Why is that so, kiddos? Newton's third law, 4.8 Newton। Is this question clear? ये जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास काफी पूछा जाता है, ठीक है? तो याद रखिए, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो उसको हमेशा हमेशा हमेशा, मैं 3 बार बोल रहा हूँ, हमेशा वेट ऐड करते हैं। ये क्योंकि वेट भी ऑफ कोर्स उस वेट के साथ आके वो गिरता है। सही हो गया? Could you please, अच्छा, use the information 3 to calculate the magnitude of the average force on the floor on the ball during the collision। देखें, जब बॉल जमीन पे गिरा ना, वो पूछे कि जमीन ने कितनी फोर्स लगाई बॉल पे टू पुश इट बैक। देखें, दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स, जो बॉल जितनी फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड, उतनी ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट सरफेस इज गोना एक्सर्ट बैक ऑनटू द बॉल। ठीक हो गया? तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 4.2 प्लस 0.6 बनता है हमारे पास, जो हमारे पास, ये हमारे पास फोर्स ऑफ कोलिजन ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम, एंड दिस इज योर वेट। देखिए जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरा है तो उसकी एक चेंज इन मोमेंटम की वजह से फोर्स थी ना, जब मोमेंटम चेंज हुआ। ठीक है यमुना? Question number 2. A ball is thrown vertically downwards to the ground as illustrated in figure 2.1. The ball is thrown with speed u from a height of 1.5. The ball then hits the ground with a speed of 8.7. Assume that the air resistance is negligible. Calculate speed u. So ये बड़ा सिंपल सा हमारे पास सवाल है। This is v, this is u, we have s, and we know a. So v square is equal to u square plus 2as। तो v स्क्वायर हमारे पास होगा 8.7 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.81 इंटू 1.5। u का आंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर, 6.8 मीटर्स पर सेकेंड। यानी क्वेश्चन इतना करवा दिया कि अब रट्टा हो गया, सही है? यप। नो, नॉट द चेंज इन मोमेंटम यमुना, वी add the force due to the change in momentum, force due to the change in momentum। ठीक है? The average force exerted on an object is equal to the rate of change of momentum। State how Newton's third law applies to the collision between the ball and the ground। हमारे पास क्या होगा, same magnitude, different, opposite directions actually। सही है, हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम है बट हमारे पास डायरेक्शन कैसे है? इट्स गोना बी दिस ऑपोजिट। डायरेक्शन हमारे पास हमेशा ऑपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम होता है। अस्सलाम वालेकुम हाशिम। How are you doing, kiddo? Mic open करके अपना introduction करवा दे। I believe it's your first class. That's the first time I'm seeing your name here.
तब तक बाकी सब सेकंड ये सवाल करें, बात सी करें। चैट में बता दे मेरा फॉर्म। लेट्स गो सिटी। Yes, what chapter are we on? We're in dynamics. Dynamics. You would have to watch a few recordings to really understand this chapter. Okay, the ball is in contact with the ground for a time of 0.091 seconds. The ball rebounds vertically and leaves the ground with a speed of 5.4. So its speed is 8.7 while it's falling, and then it rebounds with a speed of 5.4. Calculate the magnitude of the change in momentum of the ball during the collision. So change in momentum is equal to mv minus mu. So that's going to be 0.059 into, again, it's the direction is changing, right? So we can just add these up, 7.8.7 plus 5.4. Shukr, alhamdulillah. What's the answer, Yamna? 0.59 into this spot C, 0.83. 0.83 Newton second, okay? Then determine the magnitude of the average resultant force. So what's the formula? F is equal to change in momentum over time. The change in momentum was 0.83. What was the time? 0.091. इसका आंसर मुझे बता दें क्या है? तो मैं नीचे से देख लेता हूँ. It's going to be 9.1. So for the students, Hashim, this is actually our, I believe, 6th or 7th class we on dynamics. So I don't know if you understand this topic right now or not. You would have to watch some recordings, okay? And Fazan, why are you so late today? Perfect. Use your answer in C to calculate the magnitude of the average force exerted by the ground on the ball. Again, this is your force due to the change in momentum. We are gonna add the weight. What's the weight? Mass kitna tha? 0.59. 9.81. So I believe 9.7 is gonna be our answer. I believe up 9.7, guys. So an easy peasy question done. Is this question clear, everyone? Timur, Arisha, Abdullah, Fazan, Hashim, Yaya, and all others as well. Question clear हो गया ना? अब एक question guys आप लोगों ने खुद करना है. Let me give you a question. Oh, I want you guys to try question number 4. I want you guys to try question number 4. I'm gonna give you guys 5-7 minutes to do this, and then I'm gonna solve this. The first part is state the principle of conservation of momentum, and the second part is calculate theta.
Yeah, but you also have to add in a closed system, Hashim. 4 more minutes. Asad, attempt this question that you can see on your screen. And why are you so late? And I believe you haven't been taking classes as well. I've barely seen you in classes. Hashim, kindly use everyone to chat. Do not DM me. बताएं क्या आंसर आता है? I can't see the full question. This is the full question, kiddo. You have to find theta. You just have to attempt these two paths. So state the principle of conservation of momentum. And momentum before and after collision is equal in a closed system. Now this part. By considering the moments or components of the momenta along the line AB. Now what do they mean by along the line AB? They're talking about horizontal momentum. What do we have to find? We have to find theta. Acha, it's easy. I don't feel like it's मुश्किल सवाल तो नहीं है.
बॉल एक्स का मास हमारे पास 3 kg है, दिस इज 2.5 kg, दिस इज 3 kg, दिस इज 2.5 kilograms, ठीक है। अब बेसिकली इधर हो क्या रहा है, यहाँ हमारे पास गाइस द इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। वेरी सिंपल, we're gonna find the horizontal initial momentum for x, that's gonna be 3 into 4 cos theta plus the initial momentum for ball y, that's gonna be 2.5 into, what's the mass, that's the mass, into 4.8, that's its speed, into cos theta is equal to the final momentum. What's the final horizontal momentum? That's going to be 3 plus 2.5, 5.5 into 3.7. इसको मुझे जरा आंसर फाइंड करके दें आप लोग. We just need to make this one simple equation that your horizontal momentum is equal, your initial horizontal momentum is equal to your final momentum. और आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, the answer is going to be 32 degrees guys. वैल्यूज यही हैं, आप लोग मैथ गलत कर रहे हैं. 32 degrees. And one very, very, very important thing for all the students that are taking math as well as physics. In math, you're going to study a topic called circular measures. And in that, you're going to be using radian. Radian is another form of measurement of angle, okay? We usually use degrees. You're going to be using radian. And for to use radian, you're going to convert the settings in your calculator. So always make sure to convert them back when you're doing physics. सही है, ये अभी आप लोगों को आगे आप लोगों को मसला पेश आएगा. यू कैन सी कि आप लोग एक बार मैथ में कन्वर्ट करके भूल जाएंगे. एंड आई एक्चुअली नो अ स्टूडेंट दैट वेंट इनटू हिज सीआईई, उसके कैलकुलेटर की सेटिंग ही दूसरी थी. सही है, एंड देन ऑफ कोर्स उसके कोई अच्छा ग्रेड नहीं आया था. आपके सारे के सारे आंसर्स ही गलत हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं. अच्छा, इसका मुझे बताएं आंसर क्या आता है. वैसे 32 आता है, बट गिव इट अ ट्राई. इट्स गोना बी 7 cos थीटा. 7 तो नहीं होगा, इट्स गोना बी 12 cos थीटा plus whatever this is, cos theta is equal to 5.5 into 3.7. And you can just calculate theta. Cos inverse लेंगे तो आपके पास theta आ जाएगा. That's 32. Is this question clear, everyone? And by everyone, I mean everyone. Timur, yeah, ने कह दिया. Hashim Fazan Asad. Is this question clear? We equated our initial horizontal momentum with our final horizontal momentum. Okay, by calculation of kinetic energies, state and explain whether the collision of the ball is inelastic or perfectly elastic. So what are we going to do? We're going to find the initial momentum, and we're going to find the initial kinetic energies. We're going to add them up, and we're going to equate them to the final kinetic energy. And if they're equal, it's going to be an elastic collision. And if they're not equal, it's going to be an inelastic equation. Kindly do this question. Find if they're elastic or non-elastic. Find the initial kinetic energy of x and y, add them up, and then you can do.
What's the kinetic energy? Is the answer same for everyone in elastic? And is 52.8, and is everyone getting 52.8 and 37.6 as well? So our answer is going to be inelastic, because the kinetic energies are not the same. And it's going to be 52.8. This is your initial, and 37.6. This is the final goal. Clear? One more question. Try this. You have to find theta. So can you do the last part yourself? Of course I can. You just have to find the kinetic energies, yeah. So it's gonna be 1 by 2 into mass into 4 square plus 1 by 2 into 2.5 into 4.8 square. This is gonna be your initial kinetic energy, and your final kinetic energy is gonna be 1.2 into 5.5, because these two objects have joined together, multiplied by 3.7 square. You have to calculate the angle theta. Sir, will we use cos for this? Because यही तो सोचे ना. Fragment C, fragment B, fragment A. It's a very interesting part actually.
You can use both of them, by the way. Cos and sine both. It's a very interesting question, Aditya. जल्दी से आंसर बता देंगे guys. Of course, Hashim, I'm going to explain each and every question. किसी से नहीं हो रहा guys? नहीं भी हो रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं है. Sin theta is equal to 12, not possible. The answer should always be less than 1. Acha. Now you can do this question in two ways. You can either equate the horizontal momentum, initial and final, or you can just equate the vertical momentum. So yeah. So firework is initially stationary. It explodes into three fragments, A, B, and C, that move in horizontal plane, as shown in the view from above in figure 3.1. Fragment A has a mass of 3m and moves away from the explosion at a speed of 4 meters per second. Fragment B has a mass of 2m and moves away from the explosion at a speed of 6 meters per second at right angles to the direction of A. Fragment C has a mass of m and moves away from the explosion at a speed v at an angle theta as shown in figure 3.1. Calculate the angle theta. थीटा हमारे पास क्या होगा?
अच्छा, अब देखिए हमारे पास इनिशियली दिस ऑब्जेक्ट वाज ओवर हियर, सही है। Initially, the object was over here and it had no momentum. So initial momentum is zero. So ये firework का initial याद रखिए momentum कुछ भी नहीं था. Now, if the initial momentum is zero, that means that the final momentum should also be zero. And how can it be zero? Again, this is traveling towards the right, so it has a rightward momentum. This will have a leftward momentum. So both of these should be equal to cancel out each other out, right? And then this fragment B has a vertical momentum. So this fragment should have a vertical momentum as well. That should be equal to the momentum of fragment B. Do you guys get that point? These need to be the same. Because if they're not the same, again, these need to be the same, because if they're not the same, आपके पास in final momentum would be zero. So you can just equate any of these. So I'm just gonna go for 3m into 4 minus, because this is the opposite direction, it's going to be m into v cos theta is equal to 0. Okay? And from here, what I can do is m is going to cancel each other out, because it's going to be 12m is equal to mv cos theta. So either मेरे पास क्या हो जाएगा, my m and m is gonna cancel each other out. So my answer is gonna be v cos theta is equal to 12. अच्छा, अब कैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में v भी नहीं है. So what we're gonna do is we're gonna also do it for the vertical momentum. हम यही equation vertical momentum के लिए बनाते हैं. That's gonna be 2 into 6 to, oh just a second guys, a very important point आप लोगों ने इधर याद रखना है. ये जो मैंने गलती की है, this is a mistake I just made. We won't be using cos over here. We're going, अच्छा हाँ, we're going to be using sine. Why is that so? मुझे कोई बता सकता है साइन थीटा? इधर हम लोग को साइन थीटा, हम हॉरिजॉन्टल की बात करें बट हम साइन थीटा लेंगे. व्हाई? कि our horizontal component is actually our vertical component, because it's in the, our vertical component is in our horizontal direction. Do you guys get that point? क्योंकि थीटा इधर है, अगर थीटा इधर होता तो तब कॉस होता. अभी चूंकि थीटा हमारे पास इस पोजीशन पे, इट्स गोना बी आवर vertical component. Do you guys get this point? It's actually going to be v sine theta is equal to 12. And we're going to do the same thing for this as well. So it's going to be 2m vertical के लिए अब मैं कर रहा हूँ 2m into 6 minus m into v into cos theta is equal to 0. ठीक है, इसको सॉल्व कर ले, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2m into 6 is going to be is going to cancel out again. It's going to be 12 is equal to v cos theta. अच्छा, इधर मेरे पास क्या आ गया, v sin theta, and यहाँ मेरे पास 12 is equal to v cos theta. Now we can do this question two ways, okay? Sin over cos is equal to tan. I can just make v the subject, v is equal to 12 over cos theta, and I can substitute that v over here. Again, a very difficult question, इसलिए 3 marks का है. तो मेरे पास हो जाएगा 12 sin theta over cos theta is equal to 12. 12 cancel हो जाएगा. Sin theta over cos theta is, याद रखें, tan theta. Tan theta is equal to 1, and you just have to take the inverse. So theta is going to be equal to, आपके पास आंसर लिखा होगा, it's going to be equal to 45. Now this is what you have to do to guys just get 3 marks. अब समझ आया कि एस फिजिक्स कितनी मुश्किल है? फीलिंग आ रही है, अंडरस्टैंड जी? एवरीवन, आई एम 110% क्लियर श्योर आप लोगों को ये चीज क्लियर नहीं हुई होगी. आई वांट एवरीवन टू जस्ट फॉलो व्हाट आई जस्ट डिड अगेन. देखें कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है या नहीं. जस्ट डू द सेम क्वेश्चन अगेन. दैट्स नॉट अ फ्लिपिंग, बेसिकली मैंने सब्स्टिट्यूशन की है. 12 फ्रॉम दैट कैंसल आउट. 12 कैंसिल हो गया ना, दोनों साइड पे ही हमना थे. या ये याद रखिए, साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू tan.
Oh yeah, that was because our theta is over here. सही है। तो इधर से आप cos देखें, इधर जो हमारे पास cos वाला component बन रहा है, this component, this is our cos theta वाला component, this is in the vertical direction. Component cos है but direction vertical है, देखें उसकी। And this is our sin theta, but इसकी direction आपके पास horizontal है, it's in the horizontal plane। तो सिर्फ हम लोगों ने वो किया, उससे अलावा there's nothing to it, there's no rocket science, यही है। सेम थिंग, वो 12 12 कैंसिल ही होता है आपके पास इन बोथ केसेस। एंड अगर आपके पास 12 cos थीटा नहीं होगा, इट्स गोना बी 12 ओवर cos थीटा, हाशिम। सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन, एक बार खुद सॉल्व करें। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों से या नहीं? Guys, I need a yes or a no. I know this is like one of the toughest questions you're gonna ever get, okay? This is like the toughest question. I want you to try this on your own. Once you do that, ये एक सवाल आप एक बार खुद करेंगे ना, तो हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको याद रखें, आपका पूरा पेपर ऐसे सवालों से नहीं बनता। दिस इज जस्ट वन क्वेश्चन, द 3 mark question that rarely comes। सही है? That's gonna be it. See you guys tomorrow. We're gonna continue with these questions, and inshallah ta'ala try to complete this worksheet tomorrow.